जी, क्या पूछा था मैंने? NaCl, यस। तो मुझे ये बताओ जल्दी से, ये इसका जवाब दो, फिर हम उस रिएक्शन पे आते हैं। 11 is atomic number, 17 is atomic number. What are the number of electrons in Na and what are the number of electrons in chloride? Chlorine. Like one electron is like going to. So are we Like, talking about the whole electrons being involved into a chemical reaction? yeah, no, not No. every No. single. Yes. So which electrons are actually taking part in the chemical reaction or chemical bond formation? Like the valence shell one, like Exactly. in the last Exactly. shell. Valence electron. So if we are talking about aluminium and potassium being the reactive one as compared to aluminium, so the reason we have to give is the atomic size और atomic radii. क्योंकि साइज कम होने से जो लास्ट शेल है वो इफेक्ट हो रहा है ना। लाजमी बात है, अगर साइज डिक्रीज हो रहा है और एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा है, पोटेशियम का साइज कम है, ऐसा है, या एल्यूमिनियम का साइज कम है, पोटेशियम का ज्यादा है, क्या एटॉमिक रेडाई किसका ज्यादा है? Okay, let's do the electronic configuration. 13 and we have Yeah, 19, ऐसा ही है। yeah. अब इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन वाला जो आप पॉइंट बोल रही है ना, मैं उसको क्लियर करना चाह रही हूँ कि क्यों हम वो पॉइंट यूज नहीं कर सकते। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, देन वी हैव 8, देन वी हैव 3, राइट? Yeah. In potassium 2, 8, 8 and 1. So obviously नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन पोटेशियम में ज्यादा है, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम में कम है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड फॉर्मेशन तो वी आर ओनली कंसिडरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। जो कि यहाँ एक है और यहाँ 3 है, और बीच में जहाँ पे न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली 2 से पहले न्यूक्लियस होगा फर्स्ट शेल से पहले। तो आप ये देखो कि यहाँ पे न्यूक्लियस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन फाइनली वी हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। और यहाँ पे न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। विच हैज द लार्जर साइज? एटॉमिक रेडाई किसका ज्यादा है? KCl का like यानी size पोटेशियम का. का। अभी Yeah. क्लोराइड को तो हम छोड़ दे रहे हैं, क्लोराइड की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ Yeah, पोटेशियम की बात कर yeah. रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. सो ये रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मुझे इसको रिमूव करवाना है और सिर्फ इसको ही केमिकल रिएक्शन में शामिल करना है। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लास्ट शेल ही, सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। सेम गोज अच्छा, विद दिस अगर वन। ज्यादा होंगे तो फिर आपका एटॉमिक रेडाई ज्यादा होगा. अगर नंबर ऑफ, एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वी हैव टू मेक मोर शेल्स इन ऑर्डर टू प्लेस देम इनटू देयर रिस्पेक्टिव शेल्स, राइट? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। नॉट इन एवरी केस, लेकिन ऐसा होता है बिल्कुल। Yeah, but like so my question is कि अगर एटॉमिक रेडाई ज्यादा है तो इसका मतलब उसका नंबर ऑफ शेल ज्यादा है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। एटॉमिक रेडाई क्यों है ज्यादा? उसके साइज किसी भी एटम का इंक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज देयर आर लार्जर और हायर नंबर ऑफ शेल्स एज कंपेयर टू द एनी अदर एलिमेंट, राइट? Yeah. ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये था मेरा कि अगर यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, यही बोला था आपने, और एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है, ऐसा ही है? Yeah. ओके, तो मुझे ये बताओ आप, देयर इज अनदर क्वेश्चन, कैन वी रिप्लेस पोटेशियम with aluminium and can we have chloride bonded with aluminium after breaking this bond with potassium? is it possible कि क्लोराइड जो है वो पोटेशियम के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करके एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना ले, although we know that potassium is more reactive than aluminium? Like, Do you get the question or not? yeah, you are Yeah, asking कि if we can bond aluminum and chloride together by breaking. yeah. Although we know that potassium is more reactive than aluminium, is still, can we make a bond between aluminium and But chloride like if after? we bond them together, like
एक KCl के साथ तो ये था ना कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल फिल हो रहा था इस अच्छा यहाँ पे भी तो यही होगा, अच्छा हाँ है ना, यहाँ पे भी यही होगा। यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के हैं तो हम क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, हम बैलेंस कर देंगे आगे जाके इक्वेशन, है ना। एक ये क्लोराइड को एक मिल जाएगा, एक को एक, एक को एक। इज इट या पॉसिबल? we can कैन वी? I think Although we know the fact that potassium is more reactive than aluminium. but हम्म, हमने रिएक्शन करवाना है तो कुछ तो हमारे जी, हमने अगर रिएक्शन करवाना है तो वी हैव टू चूज द करेक्ट reactant, and we cannot choose aluminium if we are talking about potassium, because potassium is more reactive. The bond between potassium and chloride would be stronger, and aluminium is not capable of replacing this potassium and make a bond with chloride. Why? Because aluminium is less reactive than potassium. Do you get this? yes Yeah, that is the reason why every reaction is not possible. आप हर तरह के रिएक्शन अपनी बुक में नहीं देखोगे, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एलिमेंट चूज करो और रिएक्शन कर दो, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक KCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ किसी भी ट्रांजिशन मेटल को यूज करती हूँ, लेट्स से वी हैव सिल्वर Ag, this reaction is obviously not possible because Ag is very less, obviously less reactive होते हैं transition metals, मैंने आपको बताया था। Transition metals are always less reactive than the metals present in group 1 and 2, right? So this silver is again not capable of breaking this bond and replacing this potassium and make a bond with chloride. So this is again not possible. क्या ये बात clear हुई है? yes I think Sure. yeah एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। सोडियम क्लोराइड ले लो आप, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड के बाद आप अगेन एल्यूमिनियम ले लो, नॉट पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? uh, AlCl Cl, AlCl, that's it, AlCl AlCl3। इसके साथ में कोई भी, अब Al belongs to group 3 है, ठीक है, we can take any, literally any metal from group 1A, let's say lithium, let's say sodium, any of them. Obviously they are more reactive than this aluminium, and obviously they are going to break this bond, they are going to replace this aluminium, and as a result we have a formula of sodium chloride, and aluminium would be left alone, and aluminium is going to be unbonded from chloride, और इस तरीके से हम फिर इक्वेशन बना सकते हैं। क्या ये इक्वेशन आई है समझ? yeah Okay, can you balance it? AlCl3 plus sodium, and then we have NaCl and Al. It's very easy. How many aluminium we have? Okay, the approach to balance the equation is first consider the first element, aluminium को सबसे पहले aluminium को consider करो आप, one by one लेके चलो। एक aluminium reacting side पर है, एक aluminium product side पे है, it is balanced। Chloride 3, यहाँ कितने हैं chloride? यहाँ पे 1 है ठीक है, क्या करें? we have to add 3 Here, right? Can we add it here? no Exactly. इसकी वजह से 3 क्लोराइड तो हो गए, बट सोडियम भी कितने हो गए बेटा? 3 so we 3, have to that means we have to add 3 over here as well, ऐसा ही है? yes ठीक है, थोड़ी सी एक डिफिकल्ट इक्वेशन जाते जाते हम कर लें, और फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी बहुत सारे इक्वेशंस के। देयर विल बी सो मेनी वर्कशीट्स टू प्रैक्टिस बैलेंस इक्वेशन, और फिर हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, एक लास्ट इक्वेशन कर लेते हैं। ओके, अमोनियम नाइट्रेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट? Ammonium is NH4 NH4, very good. Nitrate is NO NO3 or NO4 NO3, yes, NO3.
Do you remember the valency? For like N, we have +3. Okay, no, it's not. Wait, let me just check. Take your time. So N has -3. Okay, you sure? I think so. It is in group 5, so it is going to need 3 electrons. Is it -3? So the valency of nitrogen is +5, right? But I'm talking about the overall valency of nitrate. Wait, wait. Okay, wait. Yeah. Hmm. It can either have like 9, my -9, or like, okay, wait. So it has, I think so. It has -1. -1. Okay. You are obviously सही आंसर आपका, लेकिन थोड़ा सा इसको स्पीड अप करना पड़ेगा, हो जाएगा वक्त के साथ, कोई इशू नहीं है, इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। अमोनियम। It will be having +1. Exactly. So the formula is correct. NH4NO3. Yeah. Yeah. Okay. Ammonium nitrate reacts with aluminium sulfate. Aluminium sulfate का फॉर्मूला क्या होगा? Al. AlS3. एल्यूमिनियम इज एल। पहले हम सिंबल लिख लेते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम इज एल। सल्फेट क्या है बेटा? Sulfate is, I think, S3. एसओ। Uh, SO, SO4. SO4. Yeah. SO. Now tell me the valency of each aluminium and sulfate. अच्छा, एल्युमिनियम की होगी +3. Yes. And then for sulfur, we'll be having -6. You can calculate it. -6. सिर्फ सल्फर की नहीं, आप ओवरऑल देखो, सिर्फ अच्छा, सल्फर की +6 है ना? सल्फर 6 ग्रुप में। इट्स ओके, आप कैलकुलेट करो, यही तो प्रैक्टिस करनी है हमने। कैलकुलेट करो आप, और उसके बाद मुझे बता दो। Is it -2? It is -2, yes. What could be the formula? Like crossover method. Al2, Al2. SO4 brackets Yeah, 3. perfect. Okay, product. Which one is going to react with which one? This NH4 is going to yeah, react with SO4 3. yes. Formula And would be, आगे अभी छोड़ देते हैं, अभी ये बताइए आप। अमोनियम एंड सल्फेट, फॉर्मूला क्या होगा अमोनियम सल्फेट का? Valencies are written already, so you can easily make the formula. This one is +1, right? Is it the correct formula?
Yeah, it is going to be NH4 brackets 2, वेरी गुड जी. and then SO4 is going to remain the same. Exactly. And what next? NO3 and Al Hmm. going to be Al with like no signs, and then Hmm. NO3 with 3. Perfect. ठीक है. तो Yeah. आपको अगेन जब आप यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो एल्यूमिनियम सल्फेट का, आप यहाँ अमोनियम नाइट्रेट का बॉन्ड ब्रेक करने वाले हो, तो आप जब इस नाइट्रेट को एल्यूमिनियम से जाके बॉन्ड बना रहे हो तो अगेन फॉर्मूला आप एग्जैक्टली Al2NO3 नहीं लिखोगे कभी भी. आप देखोगे कि भाई इसकी वजह से क्या थी, इसकी वजह से क्या थी, यही फॉर्मूला मेकिंग है. तो मैंने यहाँ पे Al2 लेके नहीं गई मैं ऑब्वियसली. Al2 का मतलब है दिस टू इज रिप्रेजेंटिंग द वैलेंसी ऑफ सल्फेट, राइट? बट नाउ वी आर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड एंड मेकिंग अ बॉन्ड विद नाइट्रेट. सो वैलेंसी वुड बी अकॉर्डिंग टू नाइट्रेट. तो जब भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो आप सिर्फ एलिमेंट्स पिक करते हो. आपने एल्यूमिनियम पिक कर लिया, आपने नाइट्रेट पिक कर लिया, उसके बाद आपने चेक किया कि भाई इसकी वैलेंसी +3 थी, इसकी -1 थी, एंड देन अगेन क्रॉस ओवर मेथड एंड यू गॉट टू राइट द फॉर्मूला. ठीक है. कैन यू बैलेंस इट? लेट्स टॉक अबाउट अमोनियम फर्स्ट. ठीक है. we have one ammonium here and two here. So first thing we are going to do is putting two over here, correct? Yes. But nitrate is like two, and we have three nitrate here. So like we're going to write Can we write like, three here? yeah, Okay, let's make it three. But now but then ammonium is three and this is two. we can write something which. Okay. देखो अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना कि ऑब्वियसली एक की वजह से दूसरा तो बैलेंस बैलेंस आउट होगा उसका, तो आप आगे आ जाओ. आप ये देखो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है और सल्फेट 3 है. तो मैं सल्फेट को 3 करने के लिए यहाँ 3 लगाऊंगी. ऐसा ही है. Yes. और एल्यूमिनियम को 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 करने के लिए मैं यहाँ 2 लगाऊंगी. Yes. नाउ लेट्स काउंट अमोनियम. 3 2s are. 6. Can we write 6 here? We can. Yeah. What about sulfate? Sorry, nitrate. 2 3s are 6. 6. Is it 6 here? Yes. Balanced. ठीक है. तो जब भी ट्रिकी हो जाए आपके लिए, फर्स्ट रिएक्टेंट में मसला हो आपको कि भाई इसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, इसकी वजह से, तो आप आगे बढ़ के देखो कि भाई नेक्स्ट रिएक्टेंट में क्या हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग क्या मैं बैलेंस कर सकती हूँ. तो इतना मतलब मुश्किल नहीं होगा, बट ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. इतना इजी भी नहीं है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू शेयर सम लिंक्स रिगार्डिंग वर्कशीट्स ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व इट. और लेकिन इसको सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगेन आई एम आस्किंग यू टू रिवाइज द होल मेथड ऑफ मेकिंग फार्मूला, स्पेशली आयनिक फार्मूला, क्योंकि अभी मैंने आपको ये सिंपल इक्वेशंस करवाई हैं बहुत. इसके बाद आपकी आयनिक इक्वेशंस आएंगी. आयनिक इक्वेशंस के अंदर ऑब्वियसली आपको फार्मूला पता होना चाहिए और कुछ और पॉइंट भी है. तो लास्ट में आप कल की क्लास के लिए फॉर्मूला रिवाइज करो. हाउ टू कैलकुलेट अ वैलेंसी. ठीक है. रिएक्शन पॉसिबल, ये भी देखना पड़ता है हमें कि रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं. जैसे मैंने आपको आज एग्जांपल दी, समटाइम्स ऐसा होता है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको रिएक्शन को बोल दिया है कि भाई दिस रिएक्ट विद दिस वन, बट रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता. तो आपको आंसर लिखना होता है कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ये आपको कैसे पता चलेगा? उस रिएक्टिविटी की बेसिस पे. So try to revise the whole concept about making the formula and obviously calculating the valencies. ठीक है बेटा. कोई क्वेरी यहाँ तक? नहीं. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. Allah.